Hello. Welcome back to my YouTube channel, Gauristyles. I'm Gauri, and you can see today's makeup is so dramatic. So, you have guessed it right. This is episode 2 of Dramatic Eyes with Gauri. I know I have started this dramatic eye makeup long back during the start of my YouTube journey, and I've taken a long gap in between. I have certain valid reasons for missing out. I'm gonna tell you in the course of time, not today, but in the due course of time. But during the time of my absence, I posted some very interesting reels and shorts on my YouTube, which you guys have clearly loved and liked. Today, I have created this very beautiful mermaidy dramatic eye makeup look for you all. Here's my inspiration. I saw this look on an Instagram reel and I absolutely fell in love with this look. I thought of recreating this look with whatever products I have. Comment down below if you also think I have recreated this look as close as shown in the picture. That would mean a lot to me. I do some very dramatic eye makeup look under the dramatic recreation by Gauristyles because I love makeup in general, and to play with makeup, I do this series. It is just for fun and for love towards my makeup. And you can see how beautiful the look has turned out to be. I hope you guys like it. I would request you to follow me on my Instagram as well as on my Facebook as well, because I post some very interesting reel over there as well, which would be very helpful for you all. And I hope I have done justice in creating this look. So without wasting any further ado, let's roll in. Hey guys, after a long time you are seeing this face. So without wasting any further ado, let's begin with the makeup. So first we have to prime and prep our face, and for that even glow and brightening skin, we will be using a strobe cream, and I would be using none other than MAC strobe cream. Go, this is my MAC strobe cream in the shade Pink Light. This one is just awesome. In case if you are looking for a budget option, then you can purchase the Pond's strobing cream. That one is really very good, and I have a full review of the strobe cream on my YouTube channel. You can go and check it out. Okay, this one is hydrating yet glowy, and you can see how glowy my face is looking. I'm skipping the moisturizer on my nose area because I sweat a lot from my nose area. So I would be skipping the moisturizer on the top of my nose. Okay, rest I would be applying everywhere. Okay, you have to wait for 1 to 2 minutes for your moisturizer to seep in your skin and deeply get absorbed in your skin, and then you have to apply your primer. For primer, I would be using Maybelline primer today. This one is a recent purchase. This one is a Maybelline primer, and I would be applying it on my face today. This one is a hydrating primer and it doesn't have any silicone content in it. तो ये पोर्स को मिनिमाइज तो नहीं करेगा, बट हाँ एक अच्छा सा हाइड्रेशन प्रोवाइड करेगा. This one is mattifying. You can compare both of these sides and you can see कि ये mattify हो चुकी है. So this one is a good primer. This is my first review of this primer. और देखते हैं आज मेकअप कितना अच्छा टर्न आउट होता है, but so far so good. I'm liking it. जहाँ भी आपके पोर्स वाले एरिया है वहाँ पर आपको प्राइमर एक बारी क्लॉकवाइज लगाना है और एक बारी एंटी क्लॉकवाइज लगाना है फॉर द प्राइमर टू गेट एब्जॉर्ब डीपली इन योर स्किन, और जो आपके पोर्स हैं उनकी अपीयरेंस थोड़ी मिनिमाइज हो जाए. उसके बाद आपको डैब भी कर लेना है अपने प्राइमर को. Today I would be skipping on my corrector, and today I would be applying a darker as well as a lighter shade of concealer on my face so as to cancel out all the darkness and to bring dimension to my face. So आज मैं use करूँगी Huda Beauty की concealer. You can see this one is a 3 shade darker to my skin tone and this one is a 3 shade lighter to my skin tone. और आज मैं इन दोनों concealers को ही use करके अपने face को correct and highlight करूँगी. Firstly I would be using a darker shade of concealer, and you can see where I'm applying it. I'm applying it generously under my eyes, on the tip of my nose, on the sides of my lips. By the way, मैंने लिपस्टिक नहीं लगा रखी है, बट एक बहुत awesome सा लिप बाम लगा रखा है. If you wanna know which lip balm I have applied on my lips, then comment down below. आज आपको बहुत सारा न्यू मेकअप देखने को मिलेगा. तो आई वुड बी ब्लेंडिंग दी कंसीलर विद द हेल्प ऑफ माई न्यू मॉर्फी स्पंज. दिस माई फर्स्ट टाइम ट्राइंग द स्पंज एंड लेट मी सी हाउ इट वर्क्स. मैंने बहुत अच्छे रिव्यूज तो सुने हैं, एंड लेट्स सी हाउ डज इट वर्क. ओके, इट्स सॉफ्ट एंड इट्स ब्लेंडिंग द प्रोडक्ट नाइसली एज वेल. फॉर अंडर आइज यू हैव टू लुक अप so as to avoid creases.
and you can see that my under eye darkness has been cancelled by the darker shade of concealer. तो अगर आप करेक्टर अवॉइड करना चाहते हो, आप थोड़ा इंटिमिडेट हो जाते हो करेक्टर शेड से, देन यू कैन यूज अ डार्कर शेड ऑफ कंसीलर दैट इज एज गुड एज अप्लाइंग अ करेक्टर. Okay, so this is my face after applying the darker shade of concealer. Now we would be applying a foundation, and I'm talking about Milani Conceal Plus Perfect Foundation. It's a 2-in-1 foundation. It has the goodness of foundation plus concealer, and I'm in the shade Creamy Vanilla. बिल्कुल न्यू फाउंडेशन है और आज अप्लाई करके देखते हैं कि इसका रिजल्ट कैसा है. आई हैव हर्ड अ लॉट ऑफ गुड रिव्यूज अबाउट दिस फाउंडेशन, सो आई थॉट आई माइट ट्राई इट इन फ्रंट ऑफ यू ऑल. Okay, it comes in a pump packaging. If you want a full review of this foundation, then comment down below. I would love to make a reel or a short video for you all. ठीक है, तो I'll take a little bit of foundation on the back of my hand. This one pump. Let's take one more pump. चलो, it's 1.5 pump, as you can see. I would be dotting the foundation all over my face, as you can see. Today I'll be teaching you a new technique. So now I would be using a fixing spray on the top of my foundation, ताकि foundation बहुत अच्छे से blend हो जाए, अपनी position से ना हिले. For setting spray I would be using none other than Milani Make It Last Original Setting Spray. This is my first time using it, and let me tell you the review. आज बहुत Milani हो गया. Okay, I'll wait for good 1 minute for the setting spray to get settle in my skin and absorbed in my skin, and then I will start blending my foundation with the help of the same beauty blender. चलो start करते हैं. Starting from the cheeks, I will be blending my foundation. बहुत ही अच्छे से blend हो रहा है foundation और coverage भी बहुत अच्छी है. Coverage is really very good. मैं अपनी eyelids पे भी लगा दूंगी. I like to put my foundation on my eyelids, on my under eye area as well. Though I would be using a concealer as well, but still. Guys, you can see the coverage. It's proper full coverage foundation, as you can see, और काफ़ी अच्छी सी शाइन भी दी है फेस को. सो आई एम लाइकिंग दिस फाउंडेशन एज पर नाउ. लेट्स सी कि पूरे मेकअप के बाद ये सेटल कैसे होगा और ऑक्सीडाइज कितना होगा, बिकॉज आई हैव हर्ड अ लॉट ऑफ रिव्यूज दैट दिस फाउंडेशन ऑक्सीडाइजेस अ लॉट. तो पूरा मेकअप कर लेते हैं, देन देखते हैं फाउंडेशन कैसे सेटल होगा. नाउ आई वुड बी कॉन्टोरिंग माई फेस, और कॉन्टोरिंग के लिए मैं बिल्कुल नया प्रोडक्ट यूज़ करूँगी. आई वुड बी यूजिंग दिस पर्पल कॉन्टोरिंग स्टिक. ओके, ये भी बिल्कुल न्यू है, देख सकते हो आप, बिल्कुल न्यू कॉन्टूरिंग स्टिक है, और ये मेरा पहला पर्पल का प्रोडक्ट है. मेरे पास इससे पहले पर्पल की कोई कॉस्मेटिक्स नहीं है. दिस इज द फर्स्ट एवर प्रोडक्ट, एंड लेट्स सी हाउ द प्रोडक्ट परफॉर्म्स इन फ्रंट ऑफ यू ऑल. इस वीडियो में काफ़ी सारे फर्स्ट इंप्रेशंस हो रहे हैं. आई थिंक यू गाइज वुड लाइक इट. सो कॉन्टूरिंग से क्या होता है, लेट मी टेल यू. कॉन्टूरिंग ड्रॉस शैडोज ऑन योर फेस, ताकि आपके फेस को एक बहुत अच्छा सा डायमेंशन मिल पाए. यू कैन सी इस टाइम पे मेरा फेस काफ़ी फ्लैट लग रहा है, लाइक स्किन टोन इवन हो गई है, बट कोई भी फीचर्स इनहांस होकर नहीं आ रहे. टू गिव अ 3D लुक टू माई फेस, आई हैव टू कॉन्टोर एंड हाईलाइट माई फेस, ताकि मेरे फेस पे शैडोज कास्ट हो जाए और मेरे फीचर्स काफ़ी उभर के आ पाए. सो आई वुड बी कॉन्टोरिंग माई चीक बोन्स. यू कैन सी कि जहाँ हमारा ईयर स्टार्ट होता है उसके ऊपर से एक स्लैंटिंग लाइन लेके आना है, हाफ वे थ्रू, पूरा नोज तक नहीं, हाफ वे थ्रू लेके आना है. ओके, योर चिन एरिया, इसमें तो बहुत ज़रूरत है. जो भी खाया है सब छुपाना भी है, ताकि हमारा फेस बहुत चिजल लगे. ओके, लिटिल बिट ऑन माई फोरहेड. अगर आपका फोरहेड स्मॉल है, देन अवॉइड कॉन्टोरिंग योर फोरहेड, बट आई लाइक टू कॉन्टोर बिकॉज मेरा फोरहेड थोड़ा ब्रॉड भी है, एंड आई लाइक अ गुड कॉन्टोर्ड लुक. मैं थोड़ा सा अपनी नोज को भी करूँगी. ओके, दिस स्टिक इज़ वेरी क्रीमी, आई एम लाइकिंग इट. बहुत अच्छे से ग्लाइड हो रही है यार. मतलब जब प्रोडक्ट आप नया परचेज करो बहुत डाइसी रहते हो कि कैसा परफॉर्म करेगा प्रोडक्ट, बट दिस वन इज़ रियली गुड एज पर नाउ. लाइक बहुत अच्छे से ग्लाइड हो गई है फेस पे. लेट मी ब्लेंड इट एंड शेयर माई फाइनल रिव्यूज ऑन दिस वन. फॉर दैट आई वुड बी यूजिंग अ स्मॉल कंसीलर ब्रश फ्रॉम पैक. अब मैं इसे ब्लेंड करूँगी अपवर्ड मोशन में. ड्रैग नहीं करना है बिल्कुल, नहीं तो हमारा फाउंडेशन भी नीचे से मूव हो जाएगा. हमें सब ब्लेंड करना है अपवर्ड मोशन में.
आप लोग को लग रहा होगा कि इसने कॉन्टोर बहुत ज़्यादा डार्क कलर का लगा लिया है, बिकॉज आई लाइक अ गुड कॉन्टोर लुक ऑन माई फेस. अगर आपको ये लुक अच्छा नहीं लगता है, आपको लगता है आपका फेस मडी लग रहा है, देन यू कैन गो फॉर अ लाइटर कलर, बट आई लाइक इट दिस वे. लेट मी ब्लेंड इट आउट एंड मीट यू. Okay guys, this is how my face looks after blending out the contour lines. Now I would be highlighting my face, और highlighting के लिए मैं Huda Beauty का concealer ही यूज़ करूँगी जो मैंने starting में दिखाया था. I will place the concealer on my usual areas, that is around my eyes. This one is a 2 to 3 shade lighter than my skin tone. इससे बहुत अच्छे से highlight हो जाएगा मेरा face. ओके मैंने जिस एरिया में ये कंसीलर लगाया आप देख सकते हो, ये हमारे फेस के हाइलाइटिंग पॉइंट्स होते हैं. यहाँ पे एक हाइलाइटिंग कंसीलर लगाने से बहुत अच्छी डायमेंशन निकल के आती है हमारे फेस पे. यू कैन सी, इसे पॉज कर लो, देख लो. इफ़ यू वांट यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट एज वेल, ताकि आपको पता चल जाए कि कॉन्टोर कहाँ करते हैं और हाईलाइट कहाँ करते हैं. आई वुड बी ब्लेंडिंग द कंसीलर विद द हेल्प ऑफ द सेम ब्यूटी ब्लेंडर. अच्छा, इफ़ यू वांट माई रिव्यू ऑफ दिस ब्यूटी ब्लेंडर देन कॉमेंट डाउन बिलो. आई वुड मेक अ सेपरेट रील ऑन द ब्यूटी ब्लेंडर. मैं यहाँ पे भी अपने थॉट शेयर कर सकती हूँ, बट अगर डिटेल रिव्यू चाहिए तो आप कमेंट कर दो. दो दिस ब्यूटी ब्लेंडर सीम्स नाइस टू मी, बट इससे अच्छा ब्लेंडर मैं इससे हाफ प्राइस में यूज़ ऑलरेडी कर चुकी हूँ, तो आई वुड प्रेफर दैट ब्यूटी ब्लेंडर एज कम्पेयर टू दिस वन. अगर आप मेरे ओजी स्क्वाड के मेंबर हो तो आप समझ गए होंगे मैं किस ब्यूटी ब्लेंडर के बारे में बात कर रही हूँ. दिस वन इज अ लिटिल हार्ड टू ब्लेंड. इतना सॉफ्ट नहीं है जितना मैं एक्सपेक्ट कर रही थी, बट इट्स गुड. बहुत हाइप थी गाइस. कभी कभी ना प्रोडक्ट्स बहुत ओवर हाइप होते हैं. आप परचेज कर लेते हो, यूज़ कर लेते हो, फिर आपको समझ ही नहीं आता कि यार इतनी हाइप क्यों बना के रखी थी. अच्छा, जो अंडर आई का कंसीलर है वो मैं आउटर एंड से इनर एंड की तरफ ब्लेंड करूँगी. This is how my face look after blending out the concealer. Now to add color to my face, I would be using a liquid blusher, and today I would be using this Gogo tint from the brand Benefit. एक बहुत beautiful सा orangish peachish shade है, as you can see. बहुत beautiful है. थोड़ा सा हम अपने नोज के ऊपर भी लगाएंगे. And this one is very pigmented. Same beauty blender से ही blend करेंगे. Look at the color, how natural and lovely it's looking. Natural and lovely, wow. नोज पे ब्लश लगाने से बहुत ब्यूटीफुल सा लुक आता है, एंड आई जस्ट लव ब्लश. मुझे ब्लश लगाना बहुत ज़्यादा पसंद है, बहुत बहुत बहुत. ब्लश, काजल आर माई अल्टीमेट फेवरेट प्रोडक्ट्स. ऐसे सारे प्रोडक्ट्स फेवरेट हैं, आई कांट टेक एंड चूज, बट स्टिल अगर कोई मेरी राय पूछे तो आई जस्ट लव ब्लश एंड काजल. Okay, this is how my face looks after blending out every cream product on my face. Now to set my face, I would be using a loose powder. और loose powder के लिए मेरे पास एक बहुत अच्छा सा affordable option है. This is the Fit Me loose powder in the shade number 15, as you can see. पाउडर को खोल के मैं इसके कैप में ले लूँगी. इससे पाउडर लगाने में बहुत ईज हो जाती है, लाइक आप डायरेक्टली नहीं लगा पाते हो इसके कंटेनर से. So take out the powder on the back of your cap. As you can see, जैसे मैंने निकाल रखा है. और पाउडर अप्लाई करने के लिए मैं ये पैक का पिज़्ज़ा पफ यूज़ करूँगी. दिस वन इज जस्ट ऑसम, और ये बहुत फ्लॉलेस कर देता है आपके पाउडर एप्लीकेशन को. फर्स्ट आई वुड बी ब्लेंडिंग आउट द क्रीजेस अंडर माई आईज एंड ऑन द टॉप ऑफ माई आईलेट्स एज वेल, एंड देन आई अप्लाई द सेटिंग पाउडर. मैंने अपनी आईलेट्स को भी प्रेप कर लिया है. कैसे कर लिया? पहले मैंने कंसीलर लगाया था आप सभी के सामने. नाउ आई हैव ब्लेंडेड आउट द क्रीजेस एंड अप्लाई द लूज पाउडर इन द टॉप ऑफ माई आईलेट. इससे हमारे आई शैडोज़ को एक बेस मिल जाता है, ताकि कलर्स पॉप आउट आउट के दिखें और एक सीमलेस ब्लेंडिंग हम अचीव कर पाएँ. ओके, आई विल बी सेटिंग माई नोज एज वेल एंड ऑल ऑफ द हाइलाइटेड एरिया ऑन माई फेस, दैट इज माई फोरहेड, द चिन एरिया. बस ब्लश वाले पार्ट को छोड़ के मैंने हर पार्ट को सेट कर दिया है.
और मैं थोड़ा एक्सेस लूज पाउडर लगाऊंगी अपने अंडर आइज में, क्योंकि आज का आई लुक बहुत ड्रामेटिक होने वाला है और कोई भी फॉल आउट होगा तो हम उसे ईजिली कैच आउट कर पाएंगे. To finish my base makeup, I would be topping up the liquid contour with the help of a powder contour. And for that, I would be using my trusty Hoola bronzer from the brand Benefit. And I would be contouring the areas where I will apply the liquid contour first. For blusher today, I would be using my Charlotte Tilbury Pillow Talk Purifying Face Palette as the combination of 2 blush shades and 2 highlighter shades. As you can see, I would be mixing both of these blush shades with these 2 highlighter shades. Like मैं चारों ही shades को mix and match कर लूँगी and then I would apply it on the top of my cheeks. If you want to know my whole review on this palette, then comment down below. किसी भी product का review चाहिए, कोई भी information चाहिए, then comment करो. Then only I will get to know that you require a video on so and so topic. And you can see how stunning the blush shades are. For highlighter, I would be using this Makeup Revolution Shimmer Brick. I would mix all of the 5 shades in the palette, as you can see. And then I'm gonna apply it on the top of my cheekbones. You can see the shine, how stunning it looks. It performs like a high-end highlighter. If you want a video on drugstore products that perform like high-end, then comment down below. I have a tons of recommendations for you all. My base makeup is all done and you can see how flawless and glowy my face is looking. This looking like my skin but better. देख सकते हो बहुत ही ज़्यादा फ्लॉलेस बेस मेकअप एप्लीकेशन का हुआ है. I've showed you all of the products in detail. Now let's get started with the eye makeup. The eye makeup is very complicated, but I'm gonna decode all of the steps for you all. और मैं सबसे बेस्ट बताऊंगी कि आप कैसे कर सकते हो अपना आई मेकअप बहुत ईजिली. बहुत ड्रामेटिक मेकअप है. I don't think so you guys would be doing so, but just for the sake, I'm replicating this look on my eyes. Let's begin with the eye makeup. So first, I would be using this blue kajal from the brand Revlon. इतना छोटा सा ही बचा है. I have used it a lot. Used and abused this pencil. ठीक है. So first, I would be putting this pencil and drawing my inner corners as well as my outer corners with the help of this blue pencil. बस थोड़ा सा ब्लू पेंट ही ले रही हूँ. This one is the old pencil. So you can barely see any pigmentation. Let me do one thing. I've got a quick hack for you all. मैं थोड़ा सा ड्यूरालिन लूँगी on the back of my hand. ठीक है, just a drop as you can see. ठीक है, मैं डिप करूँगी अपनी पेंसिल इस ड्यूरालिन में. इससे ना इसका पिगमेंटेशन निकल के आ जाएगा. आप डिफरेंस भी देख सकते हो. आप डिफरेंस भी देख सकते हो पिगमेंटेशन में just with the help of this Duraline. By the way, I have a full video of different uses of a Duraline. If you haven't watched it already, I would link it down below in the description box. You can go and check it out. But after the completion of this video, would be doing the same on my other eye as well. For eyeshadow, I would be using this Morphe X James Charles palette. I'll be using this dark blue shade from this palette. This one, this is a very dark blue shade, as you can see. तो जहाँ भी मैंने ये blue pencil लगाई है, on the same areas, I'm gonna put this dark blue shade. As you can see, this is gonna bring neatness to my look. I will do the same on my outer end as well. You can see I have drawn this elongated ring.
at the outer corner of my eye. I would be filling in this elongated ring with the help of the same dark blue shade, and I would be smudging it at the same time. You can see I'm filling it and smudging it. You can see the amount of fallout, but you don't have to worry about the same because I have placed the excess loose powder on my under eye, and that would take care of all of this fallout. But हम at the same time इसे dust भी करते रहेंगे ताकि ये बिल्कुल settle ना हो जाए. You can see I have smoothed out blue color on my inner as well as on my outer corner. Okay, I have dusted off the fallout and then I have retouched on my loose powder. So this is the current situation as of now. Now you can see I would be using this light blue shade and I would be placing on the inner ends of the dark blue shade which I've already placed on my eyelid. I've taken a very tiny brush as you can see and I'm diffusing out the edges of the dark blue shade with this light blue shade. You can see guys. क्योंकि इन में थोड़ा सा ये शेड लगेगी. Okay, you can see. Now I'm gonna do the same on my other eye as well. For cutting my crease, I would be using my same Huda Beauty concealer and a flat concealer brush as you can see. I would take the concealer generously on the back of my hand as you can see. Here is the concealer. But crease seems intimidating, but it's not as hard as well. Only requires practice. Everything requires practice. This is how my eyelid is looking after applying the concealer. Let me do the same on my other eye as well. Now I would be using this Morphe X Jaclyn Hill Volume 1 palette and I would be using this very beautiful turquoise shade and I would be placing it on the same area where I have applied the concealer on my eyelid. The shade name is Chada and you can see I'm stamping the brush on the areas where I placed the concealer. I would be using a very tiny angular brush and I would be taking the dark blue shade from the Morphe X palette. You can see this such a nice metallic sea greenish type of color. This one I would be topping the Chada shade with this shade named as Pool Party and this is a very beautiful metallic sea green color. I would be topping the shade Pool Party with this very pretty turquoise glitter as you can see. By the way, the palette is Revolution Makeup Revolution London palette. It's a combination of metallic and glitter shades. I can see glitter, that's why I'm topping the shade Pool Party with this glitter shade. Oh my god, look at the fallout, it's insane. But the loose powder hat is just awesome. It catches all the fallout as and when it happens. So what I'm doing is I'm refreshing the loose powder after each and every shade. I dust off the fallout and then I retouch my loose powder. I can see some silver glitter specks as well, so I would be using the same
palette, and I would be using the silver glitter from the same palette, and I would be applying it on the top of the turquoise glitter shade, which we have already applied. Thoda sa hi on the center I would apply this silver glitter. Gonna dust off all the fallout, and you can see how effortlessly the fallout has vanished from my face. I will retouch my loose powder. Let me blend out the edges once again with the help of the dark blue shade from the Morphe Extreme Stars palette. Now I would be taking a pencil brush, and I would be drawing lines as shown in the picture. Guys, let me break these steps for you all. So first what I did is I used eyeliner brush, and I used small quantity of concealer to place these lines on my inner corner, on my outer corners, just as shown in the picture. And after that I have reapplied dark blue shade along with the metallic shade on the areas where I've placed the concealer, like on the inner part as well as on the outer part, so as to give it a crisp look. And I have smoked out light blue shade on my lower lash line, as you can see. Now what I would be using is, wherever you can see the lines drawn with the help of a concealer, now I would be topping these concealer lines with the help of the white eyeshadow. And for that I would be using a tiny eyeliner brush, as you can see, and I would be picking up the white shade from the Morphe Extreme Stars palette. Okay, this one requires precision. There's a lot of fallout all over my face, but don't worry, I'll dust it off. Let me dust off all the excess eyeshadow sitting on my face, and I'll be right back. This is the final step. Now I would be using this TS Cosmetic glitter on the middle part of my lower lash line. It's in the shade Sea Peril. It's a pressed glitter. You can see this one is a pressed glitter. The one shown in the picture has applied a confetti glitter on her lower lash line, but I don't have one, so I would be using this pressed blue glitter only. Now I would be finishing my look by tightlining my eyes with the help of a Recode Black Kajal pencil, and then I'll apply some mascara and my falsies. First I would be tightlining. For that I would be using my favorite Recode Dark Kajal eye pencil. For mascara I would be using the Maybelline Hyper Curl mascara. Now I would be highlighting my brows with the help of the same Makeup Revolution highlighter palette. Let me put on my falsies and I'll be right back. This eye look has taken me ages to complete. It's so complicated, and I hope I have done justice in recreating this eye look. Okay, for lipstick I would be using this Lakme Absolute Lip Gloss. It's in the shade Creme Caramel. It's a very beautiful caramel shaped lip gloss. And I would be topping the shade this caramel lip gloss with Fenty lip gloss. Just as you top your lipsticks, you can top your lip glosses as well. You can see this gives such a nice shine and dimension to the lip. I would be applying only on the side. This brings to an end of this look, and you can see how beautiful and mermaidy this look is looking. I hope you guys like it. In case you do, then you know what to do, right? You need to like,
share and subscribe to my YouTube channel Gauristyles, and also press the bell notification next to the subscribe button so you get notified every time I post a new video. Please subscribe my channel, spread a word about my channel, which would motivate me to come up with more such creative looks for you all. Guys, enjoy some beauty shots. Okay, till then, bye-bye, take care, God bless. I hope you would subscribe to my YouTube channel and spread a word about my channel to your friends and family. Till then, bye-bye, take care, God bless.